Jai Sri Ram, friends. Now let's see about the. Did you see the movie Karthikeyan 2? We are going to review that. Okay, Karthikeyan 2. We are getting some great report and we are going to go through the plot, why it is so successful, and also keep in mind we are going to expose the rating jihad which is happening. Okay, stick around. Before going further, friends, if you are here for the first time, you make sure to like the video, everybody, and make sure to subscribe the channel Bharat Marg if you didn't already, and also press the notification button to make sure that you get notified whenever we go live, so that you can join us, comment and discuss with us, and ask any questions you have. Okay, Karthikeyan 2 movie review. We are It's going incredible. This is a good news. Why? What we will see about it, and why the rating jihad is happening against it. Okay, let's discuss about it. Punjabi Hindu, sir. Jai Sri Krishna, Jai Sri Krishna. Let's see what's really happening. Okay, see here. The After a long gap, all areas are houseful. This is what we hear from the theaters. Many shows, wherever the shows are running, they are houseful. And Karthikeyan 2 is produced by the same producer who is the producer of Kashmir Files. And also keep in mind, like the first one, Karthikeyan, this is a Telugu movie which had a pan India appeal, and it is being played in Hindi also. Okay, first they didn't get any shows because you had to understand it's a big mafia out there. Anji, बिल्कुल बिल्कुल. इट्स अ ये बहुत बड़ा माफिया है ये, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में स्क्रीन मिलना आपका इन्फ्लुएंस का ऊपर है. और आमिर खान को इतना स्क्रीन मिला, बाकी जो भी है वो अक्षय कुमार को मिला. ठीक है, फिर इनको कुछ नहीं मिला. टू जस्ट पैसिफाई दम, उनको 60 स्क्रीन्स दिया गया ऑन डे वन. ओनली 60 स्क्रीन्स. एंड ये भी है कि इनका जो शो टाइम है वो मॉर्निंग 9 o'clock का दिया गया. Okay, morning 9 o'clock. Can you believe that? This is Karthikeya 2. Morning 9 o'clock दिया गया. Irrespective of that, इनको हाउसफुल मिला. और इनका खुश नसीब ये है कि both the films by Amir Khan, the Lal Singh Chadda and अक्षय कुमार रक्षा बंधन, दोनों बस्ट हो गया. दोनों शो बहुत कैंसल हुआ. So now they are getting more screens for Karthikeya 2. Okay, so it got increased from 6. Same story like Kashmir Files, where the number of screens are increasing on a day by day basis. Okay, तो जरा देखिए इसका कैसा है. निखिल सिद्धार्था as Karthikeya is perfectly apt for the role. इसको बोल के let me go through this and then I will say you in Hindi also, okay, for the benefit of both the audience. Nikhil Siddhartha as Karthikeya is perfectly apt for the role. He knows his best abilities and optimally uses his strength. This played out well. Anupama Parameshwaran has a role, Mugdha, that is critical in the story, but eventually she gets sidelined and the patronized. Karthikeya takes the center stage. They don't share romantic or intimate moments, but the romance is subtle. Comedy and duo Srinivas Reddy, that is Santanam, and Harsha Chumudu Suleiman did a good job. They got the audience in split in the serious, engaging adventure. Comedians Praveen and Satya get blink and miss roles. Anupam Kher's cameo worked out well. Aditya Menon as Buddy Shantanu is all right. The writing tones down his role. Tulasi as Nikhil's mom serves a purpose. All the actors
सी इन नटशल ये देखना, इन नटशल ये है कि इस एक्टर्स हैं, यू नो, अभी हमने पूरा पढ़े थे कौन कौन बोल के आपको, और ये पूरा एक्टर्स अपने रोल एकदम जबरदस्त कर चुके हैं कार्तिकेयन का। कार्तिकेयन 2 is a good movie, good movie, and that's why you see lot of housefuls happening. That too in the era where Amir Khan's movie and Akshay Kumar's are absolutely going down the hill from day to day and pulling out of the screens. Okay, now what is the story in nutshell? Let's see. Karthikeya, Nikhil Siddhartha. Again, it's a Telugu movie that is being played in Hindi also. Okay, Telugu movies are doing extremely good now. They are beating up Bollywood like crazy. Okay, for sure. Karthikeya completes his medical studies and becomes a doctor. His quest and the knowledge and the devotion is intact. उसका बहुत भक्ति भी है. He goes to Dwaraka on a personal work, but later realizes that he gets embroiled into a bigger issue of Professor Rao's murder. ये जाते हैं द्वारका पर्सनल काम के लिए. द्वारका तो आपको पता है कृष्ण नगरी है. उधर जाते जाते पर्सनल काम को जाते जाते वो राव, प्रोफेसर राव का मर्डर का क्या कारण है उसको पकड़ने का काम पे वो लग जाते हैं. He is saved by Mugdha, that is the heroine. अनुपमा परमेश्वरन उनको सेव करते हैं, and he learns Rao tasked him to find Krishna's scared and powerful anklet. यही बात है. ओके, ये हमें जो बात क्यों ये मूवी इतना पसंद आया है लोगों को, कि हमें जो इतना देर बोला गया कि ये मेथोलॉजी है, ये हिस्ट्री नहीं है, ये ऐसा नहीं है. इस पिक्चर में दे आर गोइंग मच इनटू रिसर्च वर्क. रिसर्च करके इसमें प्रूव करते हैं कि ये मेथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है. ओके, इसलिए लोगों को पसंद आया बहुत, क्योंकि डॉक्टर जो है ही इज मेकिंग श्योर दैट the anklets which are the anklet को ढूंढ के लेना जो है, इनका प्रोफेसर ने इनको काम दिया है उसको, मगर उनको मारा गया. ये फिर उसको भी पकड़ने के लिए जो ये किए, और ये एंकलेट को ढूंढने के काम भी ये चलते हैं फिर. ओके, दैट सॉल्व्स ऑल द फोर्थ कमिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. ये एंकलेट अगर है तो ऐसा है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम है लोगों को, सब इसमें सारे आपका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. वैसा पावरफुल एंकलेट है, उसको ढूंढते हैं. Karthikeyan is on a mission to get the ancient anklet of Lord Krishna. What are the obstacles he faces, and will he overcome them? This is the crux of Karthikeya 2. Okay, द्वारका गए अपना प्रोफेसर पर्सनल काम से, और उनका प्रोफेसर का मारा गया ये समझ के कि वो फिर उसमें उलझ जाते हैं कि कौन ने किसने मारा. हीरोइन से मिलते हैं, फिर उनका असाइनमेंट इनको मिला कि ऐसा एक पावरफुल एंकलेट है, उसको ढूंढ के लेना है. तो ही गोस फॉर इट. ओके, दैट्स क्या हो रहा है, यही कहानी है. द्वारका पोर्शंस आर एंगेजिंग. Journey of Karthikeya, where he is on a mission to find Lord Krishna's anklet, acts as the main layer and gives a good edge of the seat moment. Audience cheer, clap. ये देखा गया. ओके, बहुत खुश हुए ऑडियंस, बहुत एंगेज्ड थे ऑडियंस का, बहुत क्लैपिंग हुआ. they were cheering on it, all those things, because they were excited. and बिकॉज ये जो जाते हैं एंकलेट्स जो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जो पैर में लगा लेते हैं ना, चल 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 साउंड आने के लिए, पायल पायल बोलते हैं लगता है, राइट? क्या पायल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पंजाबी हिंदू जी, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली, रियल कल्चरल्स इन इंडिया. पायल बोलते हैं ना उसको, पंजाबी हिंदू जी क्या बोलते हैं उसको? ओके, अगर किसी को पता है तो बताइएगा.
ओके, तो पायल को ढूंढ के चलते हैं कृष्ण जी का। तो फिर उनको वो मिल जाती है, मतलब क्या मिलेगा या नहीं, मगर ढूंढने का ये जो है, ये कार्यक्रम है, ये बहुत आश्चर्यचकित है इनका। ये है, दैट्स व्हाट कीप द, ये जो लोगों को सीट का यज में लग के आता है, और उधर उतना उत्साहित रहा थिएटर के अंदर, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, इससे पता होता ही है। ओके, though Karthikeya and Mugda don't have much romance, their chemistry in finding the powerful and anklet work, या इतना मतलब काम पे प्यार ऐसा हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया रहा। फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म sets the tone and the mood of the film, whereas the real story is unleashed in the second half. फर्स्ट हाफ में आपको बहुत रोमांचिक लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर रियल स्टोरी इज इन द सेकंड हाफ। Nowhere now here the makers have not at all deviated from the main plot, which worked out. उनका जो प्लॉट है उसका ऊपर ही वो हट रहे, उससे निकले नहीं, ये अच्छा रहा। ओके, लोगों को भी बहुत पसंद आया। फुल थिएटर, इट वाज नॉट ओनली हाउसफुल, ओके, but also but also it was see here you find lot of housefuls here, and we जो भी हमारा पास थिएटर्स का पिक्चर आए हम लगाए इधर, बहुत हाउसफुल्स आए, मगर लोग लास्ट तक बैठे रहे, ऐसा नहीं कि आए गए। ओके, नाउ रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, writer director Chandu Monjiti came up with a good story that amplified engaging narration. The tense factor is maintained through the film. ये बहुत रोमांचिक ही नहीं, ये फिल्म में क्या है, इसमें सस्पेंस लास्ट तक रखा हुआ है। ये बहुत बढ़िया किए ने डायरेक्टर ने, अच्छा डायरेक्शन है। ओके, तो इसलिए आप जब जाते हैं आपको पता नहीं होता है कि ये होगा या नहीं होगा। दैट्स व्हाट मेक्स पीपल टू स्टिक अराउंड द टेंस। our Kala Bhairava's background music has elevated the film to next level. Music भी बहुत अच्छा है. He is good asset for this thriller. There is only one proper song in the film that gives a good relief. एक ही song है, मगर वो अच्छा है. Visuals are grand and works out easy for the eyes. Editing is crisp despite of some slow moments here and there. Yeah, जो इधर उधर हो सकता है, मगर in general it's a very good picture. Okay, technology wise also. Okay, now let's go on the, इसमें और एक एडिशनल बात है। ये तो कृष्ण जी का एंकलेट को, पायल को लेने के लिए जा रहे हैं। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, पायल ही है ना? यस सर, या पायल, यस, थैंक यू। मैं वही सोच रहा था, मुझे डाउट आ गया, थैंक यू। ओके, तो ये पायल का ढूंढने का काम ही नहीं है, इसमें दूसरा भी चलता है, उसको बताने के बिना चलता है। ओके, पायल ढूंढने का तो स्टोरी ही है, मगर दूसरा है, that is over the 75th Independence Day, Karthikeya 2 is unintentionally a film that revolves around Mera Bharat Mahan. यही है कैच। ओके, जहां ऐसा मूवीज आते हैं, रक्षाबंधन का खालिस्तानी लिखे हुआ, या आमिर खान का पाकिस्तानियों को ऊपर बढ़ावा करते हुआ, ये फिल्म में ये बताते नहीं है, मगर आपको पता होता है कि यू फील प्राउड कि आप भारत माता का बेटे हैं या बेटी हैं, और दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। एंड यू फील at the end of the day, end of the movie, you feel Bharat Mera Mahan hai. Okay, that patriotism is kind of um, uh, spills all over. The film is woven around heritage. It highlights a culture. It also stresses the disconnect between the younger generation and the history and attempts to correct them. ये जो ये प्रोफेसर लोग हैं जो अब्राहमिक कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आके बोलते हैं कि वो मेथोलॉजी है, ये हिस्ट्री नहीं है, उसको चूर चूर करती है ये फिल्म, बिल्कुल। ओके, और it also stresses that
In the end, the hero says, Lord Krishna is our ancestor. Our gods are history, not mythology. ये बड़ी बात है. ये रिसर्च के बाद आ रहा है फिल्म में. ओके, इट्स अ रिसर्च प्रोजेक्ट. और ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये रिसर्च प्रोजेक्ट है. ये तो मूवी बहुत एंटरटेनिंग है. मगर क्या है, लास्ट में हीरो ये बोलते हैं कि लॉर्ड कृष्णा जो है अपना पूर्वज थे. ये सही है ना, आप भरोसा करते हैं ना पूर्वज से. नो मैटर व्हाट द कम्युनिस्ट एंड अब्राहमिक गाइस सेस अबाउट इट, और अपना पूर्वज थे और वो हिस्ट्री है. वो जिधर जिए उधर इधर गीता उपदेश हुआ. समझ रहे ना, अगर आप कुरुक्षेत्र जाते हैं तो गीता उपदेश हुआ. ऐसा ये नहीं है, कहानी नहीं है ये. ऐसा हीरो बोलते हैं इसमें. That's an incredible thing. This sums up the belief of Karthikeya to maker. To an extent, this looks like a preaching at the end, but it is told in a convincing way that that is where the director and the hero succeeds. And the dialect writing, everything puts it in a way you feel, okay, you feel that uh, wow, that's true kind of thing. Even a kid that goes there with no background or with a communist kind of thought process from the college, they starts believing. They understand it because of the work how it is shown. Okay, so let's go to the final one. Having said all this, Karthikeya 2 is a strong factor, story, and engaging narration. The tense factor is maintained throughout. Dialogues do work in favor of the film. Dio, Nikhil, and Chandu once again chose the interesting story, devotional treasure hunt, backed by visual, uh, terrific background scores. They succeed in getting the franchise right up out. The watch the films for families and the kids. Go for this. Karthikeya to gives you a thrilling ride. Overall, it's a very good movie. Okay, that's what it is. जब जाते हैं ना, ये डिवोशनल ट्रेशर हंट है. ओके, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, फैमिली को भी अच्छा लगता है. आपको ऐसा लगता है कि you are part of it. At the same time, you are able to visualize Dwaraka. Eh? It's amazing. So director and kudos to the director and the hero and the dialogue writer, everybody. Okay, the music is also the best. But now let's come to the rating. Jihad. Okay, you see who is the cast, who is the director, producer, everything is here. Rating is 3. मैं एक बात आपको बोल देता हूं, रेटिंग जिहाद होती है. ये क्या है कि लोग जाके जो जो लोग हैं जाके गुलशन कुमार को जिहादियों ने मारकर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आपका बात. यू नो ये रेटिंग जिहाद क्या है? ये लोग जो आमिर खान के साथ हैं, खान गैंग के साथ हैं और बॉलीवुड गैंग का साथ है, ये लोग जाके ओके सारे के सारे इस मूवी को, जैसा उन्होंने कश्मीर फाइल्स को किया, वैसा ही इस मूवी के लिए 1 स्टार रेटिंग देते हैं. आप इसके लिए डोंट फॉल प्रे फॉर इट. ओके, ये जिहादियों का काम है. आप इस मूवी को रेटिंग करें तो फुल 5 स्टार रेटिंग कीजिए, क्योंकि इट इज वर्थ इट एंड इट इज अ नाइस मूवी एंड इट इज अ गुड मूवी टू सी विद द फैमिली. एंड ऐसा मूवी सक्सेसफुल होना जरूरी है, फिर ही हमको ऐसा मूवीज आएगा. राइट, जैसा कश्मीर फाइल सक्सेस हुआ, ऐसा इसको भी सक्सेस होना चाहिए, बहुत जरूरी है. इसलिए आप जाके इसको 5 स्टार रेटिंग दीजिए, क्योंकि ये जरूरी है. क्योंकि जो जिहादी मानसिकता का लोग हैं, वो सब जाके उसको, कम्युनिस्ट लोग ये वगैरह, 1 स्टार रेटिंग स्ट्रैटेजिकली दे आर गिविंग फ्रॉम द बॉलीवुड गैंग. ओके, तो इसलिए भी जरूरी है कि आप इसको समझें और इसके हिसाब से दें. बट बिफोर गोइंग फॉर द कंक्लूजन, ओके, लेट्स गो. If you are here with Bharat Marg, do know that in Bharat Marg we do train in Sanskrit. We do teach Sanskrit. Okay, and because it is if there is no Sanskrit or Sanskriti, there is no nation.
देश और धर्म। इसलिए एनीबडी कैन ज्वाइन हियर, ऑनलाइन कोर्स होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री कोर्स है, ठीक है। ऐसा ही आप मेंबरशिप भी ले सकेंगे भारत मार्ग के साथ। तो आपको बहुत सारा ऐसा गौदान करने का, गौ सेवा करने का, नंदी सेवा करने का, प्रदोषम द्वादशी पूजा करने का, अमावस्या को क्या बोलते हैं, अन्नदान करने का, बहुत सारे काम हम करते हैं। ये सब आप शामिल हो जाएंगे ऐसा मेंबर बन के, तो यू विल फील एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। एट द सेम टाइम आप हमें भी मदद करेंगे, क्योंकि आपके मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि हम भारत मार्ग में वी टेक पिलग्रिमेज ट्रिप्स, पूरा भारत में हम लेके जाते हैं, साउथ में रामेश्वरम किधर भी हम लेके जाते हैं। ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड लग्जरी ट्रिप है, और जिसको भी जाना है वो अपना व्हाट्सएप में +16479644790 में कांटेक्ट कर सकेंगे, और ये पूरा अरेंजमेंट होती है, हम लेके जाते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन फ्रेंडली होती है, एज वेल एज इट इज व्हाट यू कॉल द स्पेशल नीड पीपल, चिल्ड्रन फ्रेंडली आल्सो। ओके, एंड हम हर दिन एक धार्मिक मैसेज भेजते हैं, उसको लेने के लिए आप सिर्फ +16479644790 पे एक व्हाट्सएप कीजिए, आपका नाम, आपका लैंग्वेज, पसंद लैंग्वेज क्या है और किधर से हैं, ये भेजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, बट in conclusion, Karthikeya 2 is a fantastic movie, and we should go and see it, because you and your family will be excited. It's a family drama. At the same time, it gives you enormous knowledge on Dwaraka and Krishna Charitra. Okay, hope you enjoyed it, and make sure to subscribe, like the video, subscribe the channel, and press the notification button, and stay connected. Glad having you. See you shortly again. Hare Krishna, Hare Krishna.